आप देख रहे हैं के न्यूज़ HD। में हूं हारिस अलीशा गिलानी। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। पाकिस्तानी कैनेडियन कम्युनिटी एसोसिएशन की जानिब से एक पुरवकार ईद मिलन पार्टी का इख्तिताम एम्पायर बैंक्वेट हॉल में किया गया, जिसमें मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अटॉर्नी जनरल डेविड एबी, स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली राज चौहान, गैरी बैग, जेनी सिम्स, MLAs, MPs, सिटी मेयर, सिटी काउंसिलर्स ने शिरकत की। इस मौका पर प्रीमियर की जानिब से खुसूसी पैगाम भी दिया गया, जिसमें पाकिस्तानी कैनेडियन कम्युनिटी एसोसिएशन के काम को सराहा गया कि वो तमाम कम्युनिटी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, जो कि एक बेहतरीन बात है। ईद गाला में खुसूसी तौर पर सिंगर्स ने भी सुरों का जादू बिखेरा, जिसमें नवनीत जान, सनी खान तुर्क नुमाया रहे। पाकिस्तानी कैनेडियन कम्युनिटी एसोसिएशन के सदर खालिद चौहान की जानिब से तमाम मौजूद मेहमानों को वेलकम किया गया। प्रोग्राम में ईद के बारे में तफसील भी बताई गई कि हम ईद क्यों मनाते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ साथ मुख्तलिफ कम्युनिटी से आए मेहमान भी इस प्रोग्राम से खूब लुत्फ अंदोज हुए। My pleasure to deliver a message from Premier John Horgan. As Premier of British Columbia, I am pleased to welcome all who have assembled to celebrate Eid al-Fitr with the Pakistan-Canadian Community Association of British Columbia. Marking the end of the holy month of Ramadan, Eid al-Fitr is a joyous time for family and friends to gather for prayer and to celebrate the blessings we have here in BC and around the world. It is also a time for compassion and generosity, central elements of this special day. Through volunteerism, selfless giving, and serving as local leaders, the Muslim community continues to help build a stronger British Columbia for everyone. I thank the organizers and the many dedicated individuals whose efforts have made this celebration possible. The Pakistani Canadian Community Association of BC is an integral part to what makes Surrey such a welcoming and inclusive place, and I am pleased to recognize the vital work of its members who contribute greatly to the diverse cultural fabric of our province. May we all celebrate peace, love, and happiness in the year ahead. Eid Mubarak. Thank you very much, Mr. President, for inviting me here this evening. It's wonderful to see everybody. It's an honor to be here. Thank you to the Pakistani Canadian Community Association for hosting this event. We had a wonderful time in Victoria together, celebrating Eid for the first time in the Hall of Honor. This is the main hall of the legislature in British Columbia, where we gathered. It was a wonderful celebration and great to be here with you. Honorable Chief Guest, Honorable Speaker of Legislative Assembly of BC, Honorable Ministers and Honorable MLAs, Honorable MPs, Honorable Mayor of Surrey, Honorable guests, ladies and gentlemen, and very dear children, the future of Canada. Assalamu alaikum and a very good evening to everyone. We also have committee president with us, Mr. Akhtar Rauf, Mr. Naveed Waraid, Mr. Asad Godal, PCMA, Mr. Kalwan Desi, Mr. Maninder Gill. He should be arriving soon too. And special invitees, Lieutenant General Umar Durrani, Director CVTC Victoria, Vice President Davis College Tina Winnie, Engineer Brinder Sidhu, Satnam Gill, Syed Bukhari and Asim Ali with us. We thank to our directors and volunteers and sponsors who made possible to organize this event, and special thank to our community for supporting our effort. मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।